Good evening to all of you. Am I audible? Am I audible, Ravi? Right. So today we are going to discuss one of the most important topic in modern world, that is American Revolution and American War of Independence. Clear? Again, I will repeat this, that why we are reading world history, because it has its reflections on other parts of GS also. And today we will see this कि कहाँ पे reflection मिलता है, right? So basically this is the topic, American War of Independence. So first I will discuss some story part, and then I will enter into the main details of the topic. And what is the story part here we need to understand. Clear? So this range of year is important, 1765 to 1783. Clear? Because it was a long process. In this process, American Revolution was involved. Various battles were fought, and finally American independence was realized. Now let's discuss some important events, and with the help of those events we'll try to construct a story. And what is this? The American Revolution was an epic political and military struggle waged between 1765 and 1783, when 13 of Britain's North American colonies rejected the imperial rule. It means what? We are talking about North America or South America. So we are talking about North American colonies. The total number of colonies in North America is 19. So there were 13 colonies in North America. The total number of colonies were 13. And these 13 colonies came under British rule. Clear? And these 13 colonies did what? They signed, these 13 colonies, all these 13 colonies, they did what? They signed Declaration of Independence. On which date? 4th July 1776. Total number of colonies are 13 colonies. So these 13 colonies are signing Declaration of Independence on 4th July 1776. And in this way, by formally dissolving the colonies' relationship with their mother country. So which is the mother country here? The mother country is England. So by this document, what these colonies did, they dissolved all their relationship with the mother country or Britain. Previously they were the British colonies, and plunging the continent into war. Okay, so this is the point here. Now we are talking about 13 colonies. Okay, and this is the map of these 13 colonies. This is North America, right? And this is what? Okay, you can say the total 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13. These were the 13 colonies, right, in America. Now the map is like this also. These are the names of 13 colonies. Names of 13 colonies. We don't need to remember the names. Names को रटने की जरूरत नहीं है. Got it? एग्जाम में लिखने का ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा. So it's not important to remember the names. So New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, okay, Maryland, Virginia, North Carolina. All these are what? Okay, all these were the colonies which were previously under British rule. It means the nation which we know by the name of America, previously it was what? In the form of 13 colonies. And all these 13 colonies were under British rule. And from this British rule, on 4th July 1776, the colonies got independence. Because all these colonies signed a document. All these colonies, total 13 colonies, signed a document. And by signing this document, they dissolved all their relations with the parent country, and the parent country or the mother nation is Britain. This event is simply known as, right, the event of America's independence. Clear?
like India. When you are reading America, keep it in mind, Indian colony also. Okay, in Indian colony, the people were exploited by the colonial government or not? Yes or no? Yes, India mein. We were exploited by British in the same way. The people who were living in these 13 colonies, they were also exploited by the British government, and they had grievances. उनकी शिकायतें हैं British governments. They are not happy with this colonial rule, right? And gradually they began uniting against this imperial government due to the exploitation, due to the injustices that were promoted by this colonial government. These colonies were not now ready to accept the British rule. And finally, these 13 colonies became the United States of America. Okay, 9th September 1776. Previously, they signed the document that was the Declaration of Independence. 4th July को क्या हुआ था? 4th July. This is what? Declaration of Independence. And finally, on 9th September 1776, they became United States of America. But always remember this date is important. 4th July. This you can remember. इसको याद रखना है. Got it? That is the most important point. 4th July is the date. Okay. Now we are coming to the next part, that we are now familiar with the idea of 13 colonies. Okay. The names are already given here. We don't need to remember the names. Names को याद रखने की जरूरत नहीं है. What is a colony here? Now look at this definition, that the colony is a region of land that is under political control of another country. For example, here 13 colonies were under the political control of Britain. In the same way, like India was under the political control of Britain. Usually the controlling country, here who is the controlling country? Britain is the controlling country. Controlling country is physically, here the controlling country is physically, okay, far away from the colony, as was the case with the England and American colony. It means the country which is the parent country or the mother nation, or which is the controlling country, is far away from the colony. So Britain की location देखो, or look at the location of these 13 colonies. Don't you think that Britain was far away? And from far away the administration was maintained. In case of India also, Charter Act कहाँ के पार्लियामेंट में पास हो रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट. It was far away. In the same way, okay, this is here also the same system is present. Colonies are typically founded and settled by people from home country. However, there may also be settlers from other country. Okay, it means in colony, okay, for example, India, there are native Indians, clear, but the other groups came to India, other European groups came to India, clear. So this may be a possibility. They may be settlers also. Colonies native लोगों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, और colonies को settlers भी develop कर सकते हैं. India was a colony. It was not developed by settlers. It was developed by Indian people. But America जो colony है, that is the settlers colony. It was not developed by local natives, but it was developed by immigrants, outsiders who came to the America. हमेशा याद रखना. When we say India, so India is a native colony. India is a native colony because India was developed, okay, by Indian people. Other group of Europeans came and settled here. ये अलग मामला है, but native ने develop किया है. What about America? Always remember, America is a settlers colony. America is a settlers colony. जो लोग अमेरिका में सेटल होने के लिए आए, उन्होंने इस कॉलोनी को क्या किया? डेवलप किया. Now this chapter, why it is important? देखो, this year in GS paper 2 a question was asked, पॉलिटी का क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको हिस्ट्री में मिलेगा. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने उसको हिस्ट्री के क्वेश्चन में काउंट नहीं किया, नहीं तो लोग कहेंगे जबरदस्ती प्रूव करने पे लगा है कि हिस्ट्री ऑप्शन अच्छा है, इसलिए नहीं काउंट किया. बट आप हिस्ट्री की जानकारी से इसका आंसर इजिली लिख सकते हो. ओके, राइट द क्वेश्चन. GS पेपर 2, दैट इज पॉलिटी सेक्शन, देयर इज अ क्वेश्चन एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15. शायद यही था क्वेश्चन नंबर 15, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, एक बार आप देख लेना. राइट द क्वेश्चन.
Question was, discuss India as a secular state. Discuss India as a secular state and compare with and compare with the secular principles of US Constitution. Compare with the secular principles of US Constitution. ये पॉलिटी का क्वेश्चन है ना, कर पा रहे हो डिफरेंशिएट? इज इट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी? यस, technically it is a question of polity, but the answer is in history plus polity. If you have a good understanding of both, you can write very good answer. Why I am saying, when we talk about secularism, so secularism is a aspect of what? Society, है ना? And this aspect of society, okay, the nature of secularism and the kind of secularism that will be promoted in the constitution of any country, okay, or it is defined according to the context of history. तो ये historical context से define होता है secularism. And until unless you don't understand the historical context, you will not be able to understand, okay, the social context. And when I will finish this chapter, you will automatically get the answer of this question. ठीक है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. तो आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो वी आर लर्निंग हिस्ट्री हियर. दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. नहीं तो मैं सीधा बताता कॉज ऑफ अमेरिकाज रिवॉल्यूशन और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बट इफ यू रीड लाइक दैट, ओके, सो दैट विल बी ऑफ नो यूज. उसका कोई फायदा नहीं होगा. Got it this point? Now, this was especially true of the American colonies, which had settlers from all over the Europe. I told you that in America, settlers from all over the Europe came and settled here. It's also called that America was a virgin territory, okay, in a particular sense, okay, and later inhabitants from different other countries of Europe came and settled there, and in this way, kind of composite culture developed there. Okay, now let's discuss the story part again, and that will help a lot in understanding the themes. Now, why were the colonies established? Before discussing this aspect, why were the colonies were established, okay, let's discuss uh, this story, right? Discovery of America. Let's discuss this basic story कि अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ. ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नाउ देखो, 1492 is the year. All of you know this. There is no need to remember the dates. 1492. Why 1492 is important? We all know that it marks an event which was to change the life on both sides of the Atlantic forever. Because this 1492 is known for this particular event. This is what? Discovery of America. So 2 years are very important. 1 year is 1492. That is important for discovery of America, and 1498 discovery of India. Basically, we are talking about the discovery of new sea routes. We are talking about the discovery of new sea routes. This America was discovered by Columbus. It was discovered by Columbus, and India was discovered by Vasco da Gama. New sea route to India was discovered by Vasco da Gama. We all know this. Now, 1453 year, do you know? Fall of Constantinople event. Fall of Constantinople. I have already discussed with you that the need to discover new sea routes was generated. Age of exploration. याद आया कुछ? Progressive ideas from Renaissance and Age of Enlightenment did what? Promoted scientific spirit. In this way, new, okay, scientific discoveries will take place. Astrolabes, magnetic compass will come, which will make the sea voyages easier. Now the people will try to explore new sea routes. Again, this is the phase of commercial revolution. Clear? And in 15th century, we also see what? The rise of capitalism. Got it? 15th century में capitalism है. Commercial revolution के आना ही क्या है? Capitalism. Got it? Feudalism was disintegrating. Okay. Scientific and technological developments were taking place. Trade and commerce was being promoted. Commercial revolution came. This all is what?
capitalism. Capitalism focuses on profit making. But industrial revolution will do what? 1760s, 18th century. Industrial revolution will give a boost to this capitalism. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस कैपिटलिज्म को क्या देगा? बूस्ट देगा. मेरी बात समझ गया ना? नाउ अब यहाँ पे देखो 1492 कोलंबस केम and at that time sea voyages were very much expensive and risky affair. Sea voyages were very much expensive and risky affair. So here what happens that okay, this sea voyage was funded by the ruler of Spain. I have already told you Spain and Portugal. They were the early birds when we talk about the sea voyages and sea explorations or age of discovery. स्पेन और पुर्तगाल ही तो सबसे पहले आ गए थे. तो इस जर्नी को, इस एक्सप्लोरेशन को फंड किसने किया था? रूलर ऑफ स्पेन. सो हु विल रीच फर्स्ट? अच्छा देखो मजेदार बात क्या है, फंडेड बाय स्पेन, ओके, एंड they were trying to explore new sea routes for South and Southeast Asia, but mistakenly they reached America. जाना था कहीं और, ठीक है, और पहुंच गए कहीं और, ठीक है ना? तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जाना था, पहुंच गए क्या? अमेरिका. नाउ व्हाट वी सी that they thought that we are on the route of Asia, but later they realized that no, they are not, they have not reached Asia, but they have discovered a sea route to the new continent, and the land we know now to be America. नई जगह इन्होंने ढूंढ ली, राइट? और उस नई जगह की खास बात क्या थी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट? तो देखो, ओके, डिस्कवरी से जितना बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज्यादा बेनिफिट. दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट what will be the impact of this discovery, but this discovery will be very much important, okay, not for Spain only, but it will be important for the entire Europe, and it will be important for the entire world. Is it clear? This happened, okay. Now this discovery was important not only for the Spain. Obviously it was discovered by Spain, it was discovered by Columbus, so they are the early bird, so they will get many benefits. But it was also important for the rest of Europe and rest of the world also. Not only for the rest of Europe, but rest of the world also. That is one of the most important things. Now there is a question that when this new continent was discovered, were there any native population there? वहां पे कुछ लोग रह रहे थे कि एकदम वीरान था, कोई था ही नहीं, कोई जीव जंतु नहीं था. ऐसा नहीं है. There was native population. The people were living there. There were different tribal groups, but they were not dominant, and the population was very low. And this is the fact that before 1492, indigenous means local, indigenous tribes ruled America. It means there were tribal groups, indigenous tribes, they were ruling America, okay. And two of the largest tribe among these tribes are Aztec and Inca. They were the two largest tribes, and many more tribes were also there, but these are the two largest tribes. And now tell me, when there are tribes, the society is a tribal society. It means that the tribes are more dominant or powerful, or they are less dominant or powerful. They are not dominant. They are not dominant at all. They are not dominant at all. Their population is also very low, very low. They are not dominant at all. And if there will be tribals, there will be tribal conflict. So they were also in conflict with each other. वो आपस में लड़ते भी रहते थे. So they were very weaker also. They were also in conflict with each other. एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे. And they were not also able to realize the economic gains or benefits of these territories, which was later known as America. अमेरिका के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और गेन्स क्या हो सकता है, दे वर नॉट एबल टू रियलाइज इट. इस बात को भी वो समझ नहीं पा रहे थे. व्हाट इट? सो दे वर इन्वॉल्व इन व्हाट? देयर फ्रेटिसाइडल वायलेंस एंड वॉर. आपस में लड़ते रहते थे. व्हेन स्पेनिश अराइव्ड, ओके, व्हाट विल हैपन? They were in a state of conflict, constant conflict with each other. Tribes were in a state of constant conflict with each other. Tribes एक दूसरे के साथ continuous conflict करते रहते थे, और कई बार
कुछ स्मॉलर ट्राइब्स ने स्पेनिश का सपोर्ट लेके लार्जर ट्राइब्स को डिफीट करने की कोशिश की. इज नॉट इट द सेम कंडीशन लाइक इंडिया? इंडिया में तो मतलब ट्राइबल तो नहीं है, बट देवर रूलर्स, मुगल रूलर्स, रीजनल रूलर्स, दे वर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. They got the support of French, they got the support of Europeans, okay, against their neighbors. ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था ना? वही काम तो यहाँ भी हो रहा है. The tribals are fighting with each other. एस्टा और इनका सबसे पावरफुल है. इसके अलावा भी छोटे मोटे ट्राइबल्स हैं. तो जो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो स्पेनिश का सपोर्ट लेते हैं और कोशिश क्या करते हैं कि जो बिगर ट्राइबल ग्रुप्स हैं लाइक एस्टेक और इनका, इनको डिफीट करने की कोशिश करते हैं. ये बताओ, ये चीज स्पेनिश के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है. Because the bigger tribal groups can give challenge, and by taking support of the local tribal groups, what you will do? You will defeat all and you will establish your dominant on that new continent. तो स्पेनिश ने क्या किया? कुछ जगह पे कब्जा कर लिया. ठीक है. और वहां के जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ये क्या बना लेंगे? वर्कर्स, स्लेव्स. गॉट इट? तो locals will become what? Workers or slaves. And now this new group from Spain which reached America, they realized the economic gains of America. ठीक है. उनको पता ही, उन्होंने कहा यार हमने तो गलती से यहाँ पे पहुंच गए और इसका इतना बेनिफिट होगा कभी हमने सोचा ही नहीं था. They realized the economic gains and potentials of America later. Okay, this is the story. Now we are moving ahead. Okay, now Spanish. Okay, later Spanish native population conflict भी है, cooperation भी है. Got it? Colonization of America. Okay, destruction of the local communities which was living there. So they will become more weaker. They were already weaker. When the other European groups come, they are further more weaker. Now what happened? अब देखो एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ. There is a word, okay, I think इस कंटेंट में मैंने कहीं लिखा Colombian exchange. Write the meaning of Colombian exchange. Notes में लिखो. This word you can use. This is very interesting. Colombian exchange. Right. Colombian exchange is a popular phrase during the 15th, 16th century. Colombian exchange. This word is a popular phrase during the 15th, 16th century. And what is the meaning of Colombian exchange? Right. Okay. It indicates the process by which plants, animals, diseases, plants, animals, diseases, people, and ideas, plants, animals, diseases, people, and ideas have been introduced introduced from Europe, Asia, and Africa. From Europe, Asia, and Africa to America. From Europe, Asia, and Africa to America, and vice versa. And vice versa. ठीक है? And vice versa. ठीक है? तो ये कब होगा? जब लोगों का माइग्रेशन होगा. When migration of people will take place. तो लोगों के माइग्रेशन के साथ साथ और क्या चीजें माइग्रेट होंगी? प्लांट्स माइग्रेट होंगे, एनिमल्स माइग्रेट होंगे, गॉट इट? पीपल माइग्रेट होंगे, आइडियाज माइग्रेट होंगे, तो डिजीजेस भी तो माइग्रेट होंगी. ठीक है? कोरोना आया कि नहीं? चाइना से चलते हुए इधर आया ना? ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स, एनिमल्स, डिजीज, पीपल, ओके, फ्रॉम यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका से कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका. और अमेरिका सेंटर में बना हुआ है. अमेरिका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज आप जानोगे. अमेरिका सेंटर में बना हुआ है और फिर यहां से फिर, ठीक है, इन सब का वाइस वर्सा एक्सपेंशन हो रहा है. अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है. दिस कोलंबियन एक्सचेंज इज अ वर्ड. व्हाट विल हैपन व्हेन यूरोपियंस विल कम? डोंट यू थिंक दैट द कम्युनिकेबल डिजीजेस विल आल्सो कम विद द यूरोपियंस? कम्युनिकेबल डिजीजेस, यूरोप में लोगों को जो बीमारियां होती थी वो बीमारी भी आएगी. तो देखो यूरोपियन डिजीजेस आल्सो केम. अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ओके, सपोज there are some popular diseases in Europe that are frequently attacking European people. So the people will develop natural resistance against those diseases. कर लेंगे natural resistance?
अब ये डिजीज पहली बार पहुंची है कहाँ? अमेरिका में। तो अमेरिका के लोगों को जब ये डिजीज होगा तो उनमें नेचुरल रेसिस्टेंस नहीं है उस बीमारी से, तो ज्यादा कौन मरेगा? यूरोपियंस मरेंगे कि नेटिव्स मरेंगे? सिंपल कॉन्सेप्ट, नेटिव्स विल डाई। Got it? This is the most interesting concept. When European diseases will reach a new continent, so European people had already a kind of natural resistance against those diseases. Now, when these diseases will reach to America, the local tribes of America, the local people of America, they don't have a natural resistance against those diseases. So, what will happen? Who is more vulnerable? Locals are more vulnerable. तो एक तो बेचारों की पॉपुलेशन पहले से ही कम थी और यूरोपियन डिजीजेस की वजह से पॉपुलेशन और क्या हो गई? कम हो गई. द पॉपुलेशन फर्दर डिक्लाइंड. इट वाज ऑलरेडी लो एंड ड्यू टू दीज यूरोपियन डिजीजेस who was who was more vulnerable? So the more vulnerable were the local natives of America. Okay, they are more exposed, they are more vulnerable. So what happened? Example of this disease is smallpox. Clear? So it killed more natives than the European swords. Diseases killed. वहां पे आके कॉन्फ्लिक्ट में जितने नेटिव्स नहीं मरे उससे ज्यादा कैसे मर गए? डिजीजेस से मर गए. राइट? गॉट इट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और जो थोड़े बहुत नेटिव लोग बच गए उनको क्या किया? पावरफुल यूरोपियन ग्रुप्स ने ओके उनको अपना गुलाम बना लिया. दे वेर पुट अंडर दिस वर्चुअल एनस्लेवमेंट एंड ओके दे वेर फोर्सफुली ओके एंगेज्ड इन वर्क. ठीक है, एक तरह से स्लेवरी जैसी चीज है. अब आप बताओ कि अमेरिका में जो नेटिव्स हैं, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस क्या है? नहीं के बराबर. इट इज ऑलमोस्ट मीनिंगलेस. सो हु इज इंपॉर्टेंट हियर? The European groups who are coming to America. सबसे पहले कौन है? Spanish, then Portuguese will come, and very soon this news will reach to other countries of Europe that Spanish have reached to a new continent and they are earning a lot. What will happen? The other European groups will also start coming to America, these American colonies. The other European groups also start coming to these American colonies. It means Spanish, Portuguese, French, English, Dutch. They all will start coming to America. They all will start coming to the American land and they will start settling here. यहाँ सेटल होना शुरू हो जाएगा. गॉट इट? मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया है या किसी क्रिमिनल को ढूंढ रहा है तो सीधे भाग के कहाँ जाएगा? अमेरिका. ठीक है. इफ यू आर अ ट्रेडर और मर्चेंट, आपको कुछ ज्यादा स्कोप अमेरिका में दिखा तो आप कहाँ जाओगे? अमेरिका. इन दिस वे द पीपल केम टू अमेरिका एंड सम कमोडिटीज ऑफ अमेरिका वेर वेरी बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप एट दैट टाइम. अमेरिका में टोबैको, कॉफी एंड कोकोआ बीन, दे बिकम द मोस्ट पॉपुलर. तो अमेरिकन कल्चर, अमेरिका से ये यूरोप की कंट्रीज में ये चीजें पॉपुलर होंगी. टोबैको, कॉफी एंड कोकोआ बीन. ठीक है ना? दे विल बिकम पॉपुलर इन यूरोप एंड दीज थ्री कमोडिटीज वेरी सून will influence European culture also. ठीक है? As smoking tobacco became a popular pastime. ठीक है? Coffee houses emerged all over the Europe. ये क्या हो गया? एक ऐसी जगह की कल्चर से यूरोप इन्फ्लुएंस हो रहा है जहां के लोगों का डोमिनेंस ही नहीं. ठीक है? ओनली ड्यू टू द प्रोडक्ट्स दैट आर फाउंड देयर. ठीक है? ऐसा नहीं है कि लोकल अमेरिकन ने कॉफी को या टोबैको को पॉपुलर बनाया. नहीं, it was found in America. Europeans who went there got it and later they made it popular in Europe. और सिगरेट पीने वाली बीमारी इंडिया में भी लेके आए, पता ही है आपको. राइट? कहाँ से आया? यूरोपियन से आया. फेवरेट पार्ट टाइम सिगरेट पीना. और हम लोग इंडियंस लोग अपने कल्चर को कुछ ज्यादा ही ध्यान में रखते हैं. तो बता ही दिया था कल आपको, इंडियंस ने नई डेफिनेशन दे दी कि सिगरेट पीने से लड़कों का मेल जो है इनका लंग्स खराब होता है और लड़कियों का कैरेक्टर खराब होता है. ठीक है? तो ये है पेट्रियार्कल माइंडसेट. ठीक है? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ यूरोपियन डाइट्स चेंज्ड. ओके, अमेरिकाज आल्सो कंटेन वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी मिलना शुरू हुआ. Obviously, this will attract English, French, and Dutch also. They will also come and settle in America
and in this way the colonization of America started. Got it? Okay. And what about the native population? Their population is increasing or decreasing? So it is decreasing due to various factors. It means depopulation होता है, लोकल लोगों का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, आउटसाइडर्स का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. गॉट इट? नाउ व्हाट विल हैपन? द पीपल आर रीचिंग हियर, सेटलिंग हियर. नाउ दे नीड वर्कर्स टू वर्क इन द प्लांटेशन फार्म. अब उनको वर्कर्स चाहिए प्लांटेशन फार्म में काम करने के लिए. एंड व्हाट अबाउट द नेटिव अमेरिकन पीपल? क्या उनकी संख्या उतनी थी? नहीं. देयर पॉपुलेशन वाज वेरी लो. यू नीड वर्कर्स. यूरोप से तो केवल ऑफिसर ला सकते हो, वर्कर्स कहाँ से लाओगे? तो वर्कर्स को लाने के लिए इनकी निगाह कहाँ चली गई? अफ्रीका पे. तो अफ्रीका से व्हाट दे विल डू? ओके, they will purchase and bring slaves. So the practice of importing slaves from from Africa started. And in this way, the discovery of America also gave birth to slave trade. है ना, ट्रायंगुलर ट्रेड. यूरोप के लोग आए, कहाँ सेटल हुए? अमेरिका में. अमेरिका में काम करने के लिए लोग चाहिए, वो कहाँ से लाए? तो नजर कहाँ गई? अफ्रीका पे. अफ्रीका से किसको लाया? स्लेव्स को इंपोर्ट किया. और इस तरह से प्रमोट क्या हो गया? स्लेव ट्रेड. गॉट इट? तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका में अफ्रीका से स्लेव्स को लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो आप क्या आंसर दोगे? कि जो लोकल पॉपुलेशन थे, नेटिव्स थे, ट्राइबल्स थे, द पॉपुलेशन वाज वेरी फ्यू. Okay, and due to several factors that I have discussed with you, their population was constantly decreasing. So the number was not sufficient. They were virtually slaved, but that number was not sufficient, okay, to fulfill the labor force, okay, fulfill the requirement of the labor force. That's why they started importing slaves from Africa. And in this way slave trade was promoted. और ऐसे slave trade promote हो गया. तो बताओ, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका ने क्या क्या किया? पहला, एक ऐसा सेंटर, इट गेव बर्थ टू अ सेंटर वेयर, ओके, अ वर्जिन टेरिटरी वेयर डिफरेंट यूरोपियन ग्रुप्स विल कम एंड सेटल. अलग अलग यूरोपियन ग्रुप्स आएंगे, वो सेटल होंगे. क्लियर? द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, अ न्यू काइंड ऑफ कल्चर वाज डेवलप्ड हियर. गॉट इट? स्लेव ट्रेड वाज promoted as a result. स्लेव ट्रेड भी प्रमोट हुआ. And now different European groups were present in America, right now. So देखो, what is the importance of discovery of America? So the importance of discovery of America is very clear. The consequences of Columbus was in 1492, okay, it will change the world forever. पूरी दुनिया को बदल के रखने वाला है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा. गॉट इट? अमेरिका का रोल होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रोल ऑफ अमेरिका, कोल्ड वॉर, यूएस यूएसएसआर. गॉट इट? सो दिस इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड फॉर एवर. डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है. ओके, while the ramification of the exploration and colonization that followed are still debated, okay, today, but no one can deny that the discovery drastically changed lives on both sides of Atlantic. It means America also and Europe also, okay, and its effect can still be felt today. इसका effect आज भी देखा जा सकता है. That is one of the most important point, right? Now let's discuss some basic concepts again. Okay, कुछ और basic concept देखते हैं. What is the basic concept? Why were the colonies established? Colony को establish क्यों किया गया? What is the reason behind this? Okay, so what is the answer? Queen Elizabeth wanted to establish colonies in America in order to grow the British Empire, to counter the Spanish. It means in America, different European groups were present. Portuguese, Dutch, English, French, okay, Spanish, सब थे. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव obviously was, okay, English hoped that in order to find wealth, to create new jobs and establishing trade ports along the coast of America, this place can be very much important. And by this we can ensure what? Colonial gains. If we are successful in establishing our control over America, so we will be successful in ensuring colonial gains. हमें colonial gains मिलेगा. ठीक है, जैसे कि इंडिया से होता था. Each colony, however, has its unique history.
how it was founded. Many of the colonies were founded by religious leaders or groups looking for religious freedom. इनमें से 13 कॉलोनीज में से कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको किसने फाउंड किया है, किसने एस्टैब्लिश किया है, रिलीजियस लीडर्स ने। क्यों एस्टैब्लिश किया है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दे वर लुकिंग फॉर रिलीजियस फ्रीडम। दीज कॉलोनीज इंक्लूडेड ओके पेनिसिल्वेनिया और ये सारी चीजें। अदर कॉलोनीज वर फाउंडेड प्योरली in the hopes of creating new trade opportunities and the profits for investors। तो दो पर्पज है। कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने के पीछे कितने पर्पज निकले? दो। पहला क्या हो गया? ओके, एस्टैब्लिश बाय द सम ऑफ द रिलीजियस लीडर्स। एंड व्हाई दे आर एस्टैब्लिश? they are establishing to develop orthodox religion, or they are establishing to promote the idea of freedom of religion। रिलीजियस फ्रीडम के आइडिया को प्रमोट करने के लिए डेवलप करना है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात। अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है। जो अमेरिकन सोसाइटी होगी, अमेरिकन सोसाइटी या द सोसाइटी दैट विल बी डेवलप, ये फैक्ट्स आपको नहीं देखना है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दीज फैक्ट्स, दीज आर डिफिकल्ट फैक्ट्स। देखो 1617 यूरोपियंस केम टू नॉर्थ अमेरिका लुकिंग फॉर रिलीजियस फ्रीडम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। तो तीन चीजें हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूरोपियंस केम एंड सेटल्ड हियर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम? रिलीजियस फ्रीडम। द सेकेंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इस चीज की तलाश है इन्हें। एंड थर्ड व्हाट दे वांट? पॉलिटिकल लिबर्टी। ओके, पॉलिटिकल लिबर्टी। सो दे केम एंड सेटल्ड हियर। 13 colonies, they are on the east coast, as we have discussed in the map। Okay, now I am going to discuss a very important concept here। Okay, and you will be able to relate। जो आपने इंडियन सोसाइटी के बारे में जानते हो और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया वी कैन डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स हियर एंड दैट आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या है, बोर्ड वर्क करते कुछ। ओके, देखो, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर and this will be very helpful for you to understand। अमेरिका को भी समझ पाओगे, you will be able to understand American society also and Indian society also। On one side write India, and on another side I am writing here America। Got it? In India also we find that India is a secular country, this is also a secular country, this is also a secular country, and America is also a secular country, America is also a secular country, but the nature of society is a little bit different। Nature of society, ठीक है, is a little bit different। Here the nature of society is a little bit different, and in order to explore this nature of society we will have to enter into the history। हिस्ट्री में इंटर करना पड़ेगा। यहाँ नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है? इफ वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म, सो देयर इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र्स वेर अनटचेबल क्लास। शूद्र क्या थे? अनटचेबल क्लास था, and they were exploited for thousands of years। they were exploited for thousands of years, है कि नहीं? बताओ, exploited for thousands of years। तो एक प्रॉब्लम तो यही है। अदर प्रॉब्लम क्या है? there are other groups also, like Buddhist, like Jain, other groups also। the other group also came, Muslims came here, Muslims came here। clear? there are many other religions, Parsis bhi hai, Parsis bhi। so there are many other religions। now when you look at all these religions, this society, Indian society, is having diversity। Indian society में क्या है? Diversity, vast diversity। and this society is, obviously, in this society the majority population is what? Hindu population। the majority population क्या है? it is Hindu population। ठीक है? now we see that the presence of different kind of societies here, religions and caste, presented some complex political scenario, and this complex political scenario is seen in Indian national movement। ये complex political scenario कहाँ देखने को मिलता है? Indian national movement। कैसे देखने को मिलता है? अभी मैंने आप लोगों को Indian national movement नहीं पढ़ाया, बट आप रिलेट कर पाओगे। क्या complex scenario है?
फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग फर्स्ट फॉट फॉर सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम. आगे चल के मुस्लिम लीग के जो लीडर है जिन्नात, ही केम विथ एन आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी. का हिंदू एंड मुस्लिम आर okay, not only two different religions, they are two different nationalities, they cannot coexist together. दोनों साथ साथ रह ही नहीं सकते. And he demanded for a separate nation, Pakistan. It means in the history, in our freedom struggle, what is one of the most dominating aspect? एक dominating aspect सबसे ज्यादा क्या है? That different groups were fighting to get relaxations, political relaxations. Even one group was fighting for a separate nation, Pakistan, and these all claims were based on the religion or the minority status. Dalit separate electorate, Ambedkar demanded it in round table conference. तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. गॉट इट? देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स, राइट? Now, in this secularism, after independence, our independence comes at the cost of partition. ठीक है? And at the time of independence, there were more than 550 princely states जिनको हमें एकोमोडेट करना था. अमेरिका की तरह केवल 13 कॉलोनीज नहीं थे. देयर वॉज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. उन सबको क्या करना था? इंटीग्रेट करना था. मोर देन 560 स्टेट्स. सो एट दैट टाइम व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल डू? हमारे पास ऑप्शन क्या है? आवर सेक्युलर एस्पेक्ट विल बी मोर स्ट्रिक्ट और इट विल बी लिबरल. Do you think that we will promise to protect religious freedom of the minorities? Yes or no? Yes. So in Indian constitution, the nature of secularism is what? It is a kind of more interventionist secularism. Right this? In India, the nature of secularism is what? It is more interventionist. Like this. इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? More interventionist secularism. And why we are calling it more interventionist secularism? Read this. Because, right? Because, read this. Intervention of government, intervention of government, intervention of government, okay? Intervention of government, right? Positive secularism or principled distant approach will be followed. Positive secularism plus principled distant distance approach will be followed. प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच का मतलब ये है कि स्टेट सभी रिलीजन से दूरी बना के रखेगा, लेकिन जहां जरूरत होगी किसी रिलीजियस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की, स्पेशल सेफगार्ड देने की, तो स्टेट वो काम करेगा. प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच आप लोगों के मम्मी पापा यही करते हैं जब दिल्ली में तैयारी करते हैं. प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच. आपको अकेले तैयारी करने के लिए छोड़ दिया, बीच बीच में पता लगाते रहते हैं क्या चल रहा है. जब जरूरत होगी तो इंटरवीन करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट दे विल नॉट इंटरवीन. दे विल इंटरवीन व्हेन इट विल बी नीडेड. दैट इज प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच. क्लियर? बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिखता है? आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 20, आर्टिकल 30. यही तो है प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच. राइट दिस. आर्टिकल 25 टू 28 ये दिखता है. Article 29 में we see this. Article 30 we see this. We see all this. Clear? In different articles here. Okay. It means the state is the state maintaining strict neutrality here. क्या state strict neutrality maintain कर रहा है? No. The state is not maintaining strict neutrality. The state is not maintaining strict neutrality. Because state cannot maintain, कर ही नहीं सकते आप. State is not maintaining strict neutrality. Clear? State strict neutrality नहीं maintain कर रहा, वो आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको आजादी के समय माइनॉरिटीज को इस बात के लिए आश्वस्त करना था. If you are a democratic nation, that in India minorities' rights will be protected. They will be given safeguard. Minorities will be given safeguard. They will be given protection. A special safeguard mechanism लाना पड़ेगा आपको. That's why you cannot maintain
strict neutrality, आप नहीं maintain कर सकते, तो write this point. Okay, it is because, okay, it is because the state promised, नेहरू रिपोर्ट में भी हमने promise किया था 1928. It is because the state promised to protect and safeguard the rights of religious and linguistic minorities in India. The state promised to protect and safeguard the rights of religious and linguistic minorities in India. Clear? Linguistic minorities in India. Example like management of religious properties by the state, Waqf board, management of religious properties by the state. Right, next point. Abolition of untouchability. यहाँ पे भी state क्या कर रहा है? Intervention कर रहा है. So the state is having a more interventionist approach. The state is having more interventionist approach. Got it? This is one point, one idea. Now, when we come here, nature of society in America. So America was previously a virgin territory. Different European groups came and settled. सब आके settle हो गए. So basically it is a country of immigrants. ये immigrants country है. Different group of people came and settled here. And when they settled, what were the three main expectations? जब वो सेटल हुए तो उनकी थ्री मेन एक्सपेक्टेशंस क्या थी? आई हैव रिसेंटली डिस्कस्ड विद यू. वन वाज व्हाट? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. द सेकंड वाज ओके लिबर्टी, पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड द थर्ड वाज रिलीजियस फ्रीडम. ये थ्री मेन एक्सपेक्टेशंस थे. सो इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल. तो व्हेन ब्रिटिश रूल एंडेड, ओके, तो इकोनॉमी भी तो सब्जुगेट होती है. इफ इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इट मींस इट्स इकोनॉमी वाज सब्जुगेटेड अंडर ब्रिटिश कंट्री. So when it became free, these two aspirations fulfilled. And now, in order to maintain religious freedom, what America will do? Read this. America will introduce a model of secularism which will be based on strict neutrality. America will develop a model of secularism that is based on strict neutrality. It was based on strict neutrality. Strict neutrality का मतलब क्या है? The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. Read this. The state will follow a strict policy. The state will follow. The state will follow a strict policy. The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. The state will follow a strict policy to avoid favoring any religion. It means the state here is more interventionist or less interventionist? It is less interventionist, right? Less interventionist in the matters of religion. Less interventionist in the matters of religion. Less interventionist in the matters of religion. और ऐसा होने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? 13 कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे, तो हमारी तरह नहीं लड़ रहे थे कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हमें हिंदुस्तान दे दो. ये नहीं चल रहा था वहां. गॉट इट? दिस प्रॉब्लम वाज नॉट देयर. पहली चीज. एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेकंड पॉइंट इज दैट different European groups who came and settled here all are predominantly Christians. सब पहले से ही क्रिश्चियन है. मेरी बात समझ गए? है तो क्रिश्चियन ही. ठीक है. तो Christianity was predominant here. Okay, so they were predominantly Christian. Predominantly Christian. दूसरी चीज क्या है? जो भी इमाइग्रेंट्स बाहर से आएंगे इस कंट्री में, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा. उनके लिए लिबरल राइट्स होंगे. वाई? बिकॉज दिस कंट्री इज अ कंट्री ऑफ इमाइग्रेंट्स. मेरी बात समझ गया ना? सो देर आर लिबरल राइट्स फॉर द इमाइग्रेंट्स हु आर कमिंग टू दिस कंट्री. सो दिस ऑल लाइज इन द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिका. That different European groups came and settled. English आए, French आए, Portuguese आए, Dutch आए, Africans को गुलाम बना के लाए, right? They came and settled. And majority of the people who came and settled
In America, about two-third of the immigrants were the British people. ये सबसे important बात है कि अमेरिका was a settlers colony. America was a settlers colony. People from different parts of Europe came and settled here, but the majority of the settlers, that is two-third of the settlers, two-third of the settlers were British immigrants. Two-third of the settlers were the British immigrants. Two-third of the settlers were the British immigrants. ये बात समझ गया ना? अच्छा बताओ, जैसे इंडिया में हुआ था, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. सब आपस में लड़े कि नहीं? फर्स्ट कॉमर्शियल राइवलरी, देन कॉलोनियल राइवलरी, एंड फाइनली हु बिकेम पॉलिटिकल पावर? कंपनी. इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. द सेम हैपेंड हियर आल्सो. अमेरिका में भी यही हुआ. देयर वर स्पेनिश, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच. Majority of the people are English origin. English origin. They came in conflict with each other. So what we see here, okay, commercial rivalry. What we see here, colonial rivalry. Commercial rivalry and colonial rivalry. What we see here, commercial rivalry and colonial rivalry. हम इसी को देखते हैं, commercial rivalry और colonial rivalry. Got it? Finally, there are two main rivals here. This is English and French. The same like in India. इंडिया में जो हुआ था वैसे ही है. English and French were the two main rivals. English and French were the two main rivals. ये सबसे दो main rival थे, English and French. And finally, who was successful in developing these colonies at the British colonies? So British in developing this as a colonies, right? This in this colonial conflict, English emerged victorious. English emerged victorious. Okay, so these were the two main claimants of power. These two groups were the two main claimants of power. And finally, who became victorious? So English became victorious. And in this way, these 13 colonies became British colonies. These 13 colonies became British colonies. Got it? Okay. Germans, Swiss, Scottish, Irish people, they also went to America. ये भी क्या? You can write here. Germans, Swiss, Germans, Swiss, Scottish people, Irish people, they also went to America. So this is a country of what? Immigrants. ये कैसी country हो गई? Immigrants की country. अब कुछ concepts को समझते हैं. Let's discuss a few more concepts here. बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है? पूरी हिस्ट्री समझते समझते, स्टोरी के फॉर्म में समझते समझते, a time will come when you will be able to write the answer of any question. But for that you need to know the story in detail. कहीं से कोई ऐसी चीज ना हो जो समझ में ना आए. Now, अब कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, right? And that is the most important thing to know. Now, what is the basic thing here? Now, on one side, here we are looking at America. On one side, we are talking about America. और वहीं अटलांटिक के दूसरी साइड अगर हम देखें तो देयर इज कंट्री दैट इज यूरोप. कॉन्टिनेंट इज यूरोप. एंड यूरोप देयर इज अ कंट्री ब्रिटेन. यहाँ पे भी एक कंट्री कौन सी है? ब्रिटेन. नाउ टेल मी, which country at that time was the most progressive country in Europe? सबसे progressive country कौन सी थी? Britain. Clear? So Britain was, read this, Britain was one of the most progressive countries. It was one of the most progressive countries in Europe. यूरोप में प्रोग्रेसिव कंट्रीज में एक सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री कौन है? ब्रिटेन. ब्रिटेन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन यूरोप. गॉट इट? ओके. नाउ व्हाट वी सी हियर, दैट द मेजॉरिटी ऑफ in America, about two-third population in America, about two-third population have are immigrants from Britain. They are immigrants from Britain. This concept is very much important. About two-third people are
the people who are immigrants from Britain. Clear? And in Britain, the political system is what? Progressive. The political system is more progressive in comparison to other parts of Europe. क्योंकि इस समय यूरोप के दूसरे हिस्सों में क्या था? Monarchical system, absolute monarchy. And in Britain, what was the political system? Britain में political system क्या था? It was constitutional monarchy. And in constitutional monarchy, what will be the structure? King plus parliament. This is the progressive thing. In constitutional monarchy, this is the structure. King plus parliament. It means that the British people are or have adopted parliamentary politics in their political system. This is one of the most important things. So you can write here that British have are familiar with the parliamentary politics. Parliamentary politics. Of parliament when the representatives are the representatives of people. It means in Britain, if the people are paying taxes, so they no taxation without representation. Here in Britain, what is happening? Okay, the people are paying taxes and they are getting representation in the parliament, and this is a progressive. ये एक अच्छी बात कि आप taxes pay कर रहे हो और आपको parliament में क्या हो रहा है? Representation भी मिल रहा है. So this is what a representative body. This is what a representative body. और representative body के होने का मतलब ये है कि the people's aspirations are reflected in that representative body. The people's aspirations and demands are taken in a positive manner. Got it? The demands that is raised by the people, the government will have a sensitive outlook towards this demand. The government will not suppress that at once. उसके लिए गवर्नमेंट के नजर में क्या होगा? एक सेंसिटिव, जैसे इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कई बार जैसे देखो गवर्नमेंट किसान से रिलेटेड बिल लेके आई, लोगों ने आंदोलन किया, बिल वापस हो गया. तो पार्लियामेंट में क्या होता है? द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द डिमांड ऑफ द पीपल. बट कॉलोनी में क्या होगा? यही बात हमें समझनी है. दिस इज द डिफरेंस हियर. नाउ दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग. दोज पीपल who are living in Britain, they were already familiar with what? Liberal rights. Those people who were living in Britain, they were already familiar with liberal rights. Those people who were living in Britain, they were already familiar with this modern parliamentary system. People's aspirations are reflected in the parliament. और वही लोग तो भाग के चले गए कहाँ? अमेरिका. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है? अमेरिका में. इट मीन्स अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्रिटिश ओरिजिन की है, so here the British origin people are more enlightened. ये ज्यादा जागरूक है. They are more enlightened. They the level of political awareness is very high. The level of political awareness is very high. They are more enlightened. The level of political awareness is very high. And now, when these 13 colonies, will become British colonies, जब ये British colonies बनेंगी, तो British लोगों का expectation क्या होगा? ये होगा कि भाई हमारे तो मजे आ गए. We are British origin people, and this territory is a British colony. So they will thought that it is good, that this area has become what? British colony. They will thought that they are going to enjoy the same political rights that they were earlier enjoying in Britain. उनको लगा कि they will enjoy the same level of economic freedom. They will enjoy the same liberal political rights. They are going to witness the same parliamentary system in America also. But they were confused. Their expectation gone wrong. कॉलोनी का डेफिनेशन ही अलग होता है. ठीक है, कॉलोनी का मतलब होता है ये कि पौधा आपका, गमला आपका, पानी आप दे रहे हो और फल तोड़ के कोई और ले जाएगा. ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? ये मतलब होता है कॉलोनी का. दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोनी. सो द पीपल आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि अच्छा है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, राइट? When this America becomes British colony, when this colonies became British colony, right? This, okay, big British colony. And now for this British colony, this Britain is parent country.
पेरेंट कंट्री और मदर नेशन, ऐसे कई सारे टर्म्स कहे जाते हैं. नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी सीन हियर, राइट दिस, discrimination. What will be seen? Colonial discrimination. Colonial discrimination is seen here. Colonial discrimination is seen here. Colonial discrimination is seen. Okay, it means the economy of 13 colonies will be subjugated under the British economy. Okay, it means all economic policies that will be introduced in these 13 colonies, so they will be designed in such a manner that they will fulfill needs of Britain. Got it? It means यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेस बढ़ा देंगे, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो कॉलोनी के लोगों को फेवर नहीं करेंगी, वो किसको फेवर करेंगे, ब्रिटेन को फेवर करेंगे. पॉलिटिकल राइट्स, लोगों के लिबरल राइट्स क्या किए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे. नो लिबरल राइट्स विल बी गिवन टू द पीपल. नाउ द ब्रिटिश पीपल रियलाइज कि भाई ये तो खेल अलग हो गया. वी आर ब्रिटिश पीपल, बट इन दिस कॉलोनी द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इज अनब्रिटिश. यहीं से वो वर्ड आया था कि ब्रिटेन की कॉलोनी है, बट यहाँ पे जो नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल है, इट्स नॉट लाइक द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल in Britain. It's what? Un-British. Now here the people who are living here, they realize the un-British rule here. Un-British rule. ठीक है, यहाँ तो un-British rule, और वो पहले से ही क्या है, they are already politically aware. So will they oppose it or not? Yes or no? Yes. देखो, जब आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या है, लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस हाई हो, तो आप अपोज कर दोगे कॉलोनियलिज्म को. इंडिया के केस में प्रॉब्लम क्या थी, पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम, मुगल एम्परर. तो हमें कहाँ पता था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, हमें पता थोड़ी ना था पार्लियामेंट्री सिस्टम. मुगल रूलर को हटा के अंग्रेज आ गए, अपने को क्या फर्क पड़ता है, ना लिबरल राइट पहले था, ना इंडिविजुअल राइट पहले था, ना इंडिविजुअल राइट अब है. तो लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या था, कम था इंडिया में. दैट्स वाई इंडिया, इन इंडिया कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश्ड इन 1757 और खत्म होने में कब लग गया, 1947. गॉट इट? एंड इन अमेरिका द ईयर इज व्हाट, 1775 to 83. मतलब इंडिया में कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश होने के कुछ टाइम बाद ही अमेरिका वालों ने क्या किया, ठीक है, अपना फ्रीडम इंश्योर कर लिया. एंड अमेरिका वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी टू गेन फ्रीडम. अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनीज में भी पहली ऐसी कॉलोनीज थी जिसने सबसे पहले आजादी पाई. इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था, लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन पीपल हु आर लिविंग इन दिस कॉलोनीज वाज वेरी हाई. They could successfully identify the difference between British rule in Britain and the British rule in the colonies. They put a blame on the government that this is un-British rule, right? The economy of colony have been subjugated under British economy. The political rights of the people are taken away, and this un-British rule was not accepted to the people of Britain. ठीक है, अगर मान लो ये लोग कम होते तो इंडिपेंडेंस थोड़ा ज्यादा देर से आता, ये डिफरेंस हो जाता. दिस इज वन रीजन. गॉट इट? सो हैव यू गॉट दिस आइडिया? दिस इज वन कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्सेप्ट discuss concept number 2. Write this, concept number 2. Concept number 2. These are three basic concepts. I will use these concepts while discussing the main topic. This is concept number 1. Write this, concept number 2. ये तीनों concepts भूलना नहीं है. These are the most important concepts. देखो, this is the context of 7-year war. Write this, context of 7-year war. आगे मैं टॉपिक में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ. कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7-year war. क्या है ये कॉन्टेक्स्ट? तो you all know that what is the time period of 7-year war. बताओ जल्दी, टाइम पीरियड क्या है? भूल गए? यही तो है, 1756 to 1763. This is the period of 7-year war in Europe. In Europe. And two main participants were Britain and France. Two main participants were Britain and France. इनके बीच में राइवलरी चल रही थी. तो बैलेंस ऑफ पावर जो एक और क्वेश्चन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, एक टाइम यहाँ भी है बैलेंस ऑफ पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस.
And in this, now tell me, this war which continued for 7 years is what? A prolonged war. It was a prolonged war. And when you will fight a prolonged war, what will happen? The military expenses will be very high. जब आप लड़ाई बहुत लंबे समय के लिए लड़ोगे तो military expenses will be very high. Military expenses will be very high. It means the expenditure, जो expenditure है, this will also be very high. Expenditure ज़्यादा होगा. And both will suffer loss. तो नुकसान दोनों को होगा. Britain will also suffer loss. Britain will also suffer loss and France will also suffer loss. दोनों को नुकसान होगा. Britain will also suffer loss. France will also suffer loss because they fought. Both of them fought a long war, and this long war is 7-year war in Europe. Clear? This 7-year war ended in 1763 by Paris of Treaty. Modern India की क्लास में हमने पढ़ा है. This war ended with this great treaty that is known as Paris Treaty. Paris Treaty से ये war क्या हो गया? खत्म हो. अब यहाँ पे important context क्या है? देखो. What is the important context? Context is France suffered loss, Britain suffered loss. But Britain was successful in compensating its loss. ठीक है, लॉस होना बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप अपने लॉस को क्या कर लेते हो, कंपेंसेट कर लेते हो, तो आप कभी घाटे में नहीं रहोगे. एंड व्हाट ब्रिटेन डिड, एक और इवेंट बताता हूं आपको. ब्रिटेन डिड व्हाट? 1757, आप शायद रिलेट कर पाओगे अब. 1757 इज व्हाट? बैटल ऑफ प्लासी. 1764 is what? Battle of Buxar. 1765 is what? Treaty of Allahabad. By this Treaty of Allahabad, they did what? Got control over the money rights, land revenue rights. And this is what? Establishment of British rule in India. And now India was a British colony as a result. मेरी बात समझ गया? घाटा वहां हुआ 7-year वॉर में, और इंडिया में साथ ही साथ हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. और विच टेरिटरी दे आर कंट्रोलिंग? देयर टेरिटरी, द टेरिटरी दैट दे आर कंट्रोलिंग इज बंगाल. बंगाल इज वेरी प्रीशियस. 1765 में उनको वहां से क्या मिलने लगेगा? रेवेन्यूज. एंड दे मिस अप्रोप्रिएटेड रेवेन्यू. मॉडर्न इंडिया की क्लास में बताया कि रेवेन्यू को क्या किया, जहां खर्च करना चाहिए उसको छोड़ के, उस जगह छोड़ के बाकी हर जगह खर्च कर दिया. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. So in this way, what British did, they used and utilized revenues of India in financing and funding not only local wars but also international wars. Got it? इंडिया के रेवेन्यू को इंडियन पावर्स के साथ जो वॉर लड़ते थे उसमें तो वो पैसा खर्च करते ही करते थे. यहां क्या दिख रहा है कि दे आर कंपेंसेटिंग लॉस ऑफ 7-year वॉर. It means they are also using and utilizing Indian revenue in compensating the loss which took place in this 7-year war. तो फ्रांस की पोजीशन एडवांटेजियस नहीं है, ब्रिटेन की है. It means that India as a colony is what? Classic colony for the Britain. जब जब ब्रिटेन संकट में था, क्राइसिस में था, इंडिया ने उसको हेल्प किया. That's why we call this, which means that British successfully compensated their loss. That's why also we call India a classic colony for Great Britain. इसीलिए तो है ये classic colony Great Britain के लिए. Have you got this idea? These ideas may be used at some point of time in exploring the different perspectives in the answer. जब तक आप जीएस नहीं ठीक से समझोगे, आप आंसर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते. इससे तो दूर की बात है. इससे में तो मैं बच्चों को क्या ही दोष दूं, टीचर्स को देख रहा हूँ 1-2 डायमेंशन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं. उनके लिए इंडस, वो सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आके रुक जा रहा है. ठीक है, तो बच्चों की क्या मैं बात करूं. ठीक है, तो आपको जीएस पे पकड़ बनानी होगी. इस प्रेजुडिस से बाहर निकलो कि ऑप्शनल ए से ज्यादा फायदा है, बी से ज्यादा फायदा है, सी से ज्यादा फायदा है. किसी ऑप्शनल से कोई फायदा नहीं. एससे का मतलब जीएस पे अच्छी कमांड, करंट अफेयर पे अच्छी कमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की ठीक ठाक जानकारी,
प्रीलिम्स के फैक्ट्स की ठीक से जानकारी, जिससे कि आप एग्जाम्पल्स को लिख सके। मेरी बात समझ गया ना? तो उस बिजनेस मॉडल में नहीं ट्रैप होना है, एग्जाम क्लियर करना है ना, ठीक है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, ठीक है, लेकिन यू मस्ट मेक अ कमिटमेंट कि हम नहीं फंसेंगे उस जाल में। गॉट इट? ओके, सो डेवलप गुड कमांड ओवर जीएस एंड दिस विल ओपन योर गेट्स ऑफ सक्सेस। भाई पीटी में भी यही है, ठीक है। जीएस मेंस में अच्छा वो करो, और ऑप्शनल कोई भी पढ़ो। जिस ऑप्शनल में आप अच्छा काम कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, दैट ऑप्शनल इज द बेस्ट ऑप्शन। Student defines that which option is the top option, which option is the good option, which option is the best option. यूपीएससी does not define, यूपीएससी नहीं डिफाइन करती है, ठीक है। जिस साल उनको हिस्ट्री के अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, अभी मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा, 2 साल बाद हिस्ट्री ऑप्शनल टॉप पे आ जाएगा, मुझे पता है। जब बच्चों को जीएस में हिस्ट्री समझ में आने लगेगी तो ऑप्शनल अपने आप हिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शनल बहुत अच्छा नहीं होता, कोई ऑप्शनल बहुत बुरा नहीं होता, आपको जो अच्छा लगे ऑप्ट कर लो और पढ़ो, बस, ठीक है ना। यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट विच ऑप्शन विल बी एट द टॉप। ये बच्चा डिसाइड करता है। क्या इंग्लिश लिटरेचर से, उर्दू लिटरेचर से टॉपर नहीं हुए? हुए ना। सोशियोलॉजी से हुए, हिंदी से हुए, हिस्ट्री से हुए, फिलोसफी से हुए, सारे सब्जेक्ट से हुए, ठीक है। बट जिस साल ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शन के अच्छे मिल जाते हैं, तो वो ऑप्शन बेहतर करता है। ये कॉन्सेप्ट समझे? राइट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको, देन वी विल एंटर इनटू द टॉपिक। कॉन्सेप्ट नंबर 3, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 3? Concept number 3 is the reference of, okay, French Revolution 1789. Concept number 3 is the reference of French Revolution, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे, that American Revolution and War of Independence, ठीक है। जनरली देखो इसके अलग अलग डेट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे भी डिफरेंट फेजेस ऑफ रिवॉल्यूशन है, दैट आई विल डिस्कस लेटर, बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे लिख लो 1775 टू 1782, ठीक है। पहले वाले में 65 टू 83 लिखा था, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। 1775 टू 1782, ठीक है। अब देखो क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हियर द पीपल हु आर लिविंग इन दीज 13 कॉलोनीज, ठीक है। आप 1765 से इसको 1783 84 भी कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। द पीपल हु आर लिविंग इन द 13 कॉलोनीज आर फाइटिंग विद द ब्रिटेन। वो किसके साथ लड़ रहे हैं? कॉलोनीज पीपल आर फाइटिंग विद ब्रिटेन। एंड प्रीवियसली द अनदर क्लेमेंट ऑफ पावर वाज फ्रांस। फ्रांस भी चाहता था ना कि अमेरिका मेरी कॉलोनी बने, फ्रांस हार चुका था। नाउ व्हाट विल हैपन? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। नाउ द फ्रेंच विल कम एंड विल गिव सपोर्ट, फ्रेंच विल कम and will give help and support to the people of 13 colonies. इनको हेल्प और सपोर्ट कर देंगे, इट्स गुड फॉर द पीपल ऑफ 13 colonies। इन लोगों के लिए तो अच्छा है, बट व्हाट अबाउट फ्रेंच? दे वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू 7 year वॉर, जेब खाली थी, दे केम एंड सपोर्टेड दिस वॉर आल्सो। सपोर्ट मीन्स व्हाट? मिलिट्री सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स व्हाट? मिलिट्री एक्सपेंसेस। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? Okay, they will suffer loss again. So here what happened? French support, read this, and write this, huge military expenses on the side of French, huge military expenses on the side of French, huge military expenses on the side of French. So French suffered economic loss, French suffered economic loss, and they were already in economic crisis, पहले से economic crisis में, they were already in a state of economic crisis, and now they suffered economic loss again. So their economies will be what? It will be crippled, it will come in danger. And we all know that in the, you can say that in French Revolution, the one reason of this French Revolution was what? Economic crisis in France. उसी इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सारी कहानी हो गई जो आप पढ़ चुके हो। गॉट इट? सो कैन वी से दैट अमेरिकन रिवॉल्यूशन आल्सो accelerated the process of French Revolution? Yes, American Revolution did what? Accelerated the process of French Revolution. American Revolution, French support,
French suffered again huge economic loss. So economic crisis became more deeper, right? And what will happen to solve this economic crisis? States General meeting was okay summoned, and that resulted in that French Revolution. वही immediate cause भी था. This is one thing. And what about the second point here? That is very important to know, right? Second point, what is that? That is very important to know. When French soldiers will come to America to support American War of Independence, what will happen? Will they be familiar with the progressive ideas of American Revolution? Yes or no? Yes. So when they will reach France, will they promote these progressive ideals among the French people? Yes. And these progressive ideals will also help and support in what? These progressive ideals will also help and support in French Revolution. This is the next important point. So read this. Second part is right. French soldiers participated in America's War of Independence. America's War of Independence. French soldiers participated in America's War of Independence. They participated in America's War of Independence. Right, next point. Okay. They participated in America's War of Independence. As a result, they were familiar. As a result, they were familiar with the progressive ideals of as a result, they were familiar with the progressive ideals of the revolution. As a result, they were familiar with the progressive ideals of the revolution. वो revolution के progressive ideals से familiar. Got it? They were familiar with the progressive ideals of revolution, right? This and the French soldiers also emerged as a medium, right? This French soldiers also emerged as a medium. The French soldiers also emerged as a medium to promote. They also emerged as a medium to promote progressive ideals among the French people. To promote progressive ideals among the French people. They also were like a medium to promote progressive ideals among the French people. Okay? They were also like the medium to promote progressive ideals among the French people. कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आए. स्मॉलर स्टेप्स लीड टू ग्रेटर डेस्टिनेशन, बिग डेस्टिनेशन. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ. ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को क्या किया है, सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स हियर. So in 1600 and 1700, the Europeans came to North America looking for religious freedom, economic opportunities, and political liberty. And as a result, they created 13 colonies on the east coast of the continent. Like I discussed, that east coast of the continent pay 13 colonies, right? When the colonists won independence, these colonies became the original states. ये states बन गए और इन्हीं सबको मिला के हम क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Each colony had its own government, but the British king controlled these governments. It was at the time of British colonialism. जब यहाँ पे British colonialism था, so there were 13 colonies, and here is the British government. So here colonial government. Okay, so this way the relation was like this, that each colony has its own government, and who is controlling the government? British government. British king was controlling. By 1770s, many colonists were angry. Now here the many people who were in the colonies were angry. Why they were angry? Because they did not have self government. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इंडिया में था. देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग एंड वी वर डिमांडिंग फॉर व्हाट, होम रूल, क्योंकि हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था. This was the same problem here also. This meant that they could not govern themselves and their own laws. They had to pay high taxes to the king. It means here for suppose this is colony A. So the people of colonies could not govern themselves. Who is governing them? British government is governing them. They cannot take independent decisions about themselves. Who is taking their decision? British government is taking their decision. Clear? It means they don't have the right to self determination. They are not getting representation in governance. So the people in these colonies will say that
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या कहेंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नाउ दे फेल्ट दैट दे वर पेइंग टैक्सेस to a government where they had no representation. They were also angry because the colonies were forced to let British soldiers sleep and eat in their homes. वही चीज जो इंडिया में था कि ब्रिटिश सोल्जर्स की क्या थी, मनमानी थी, एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इट इज द सेम सिचुएशन लाइक इंडिया। In 1774, the leaders from the colonies meet in Philadelphia to discuss British laws because these British laws were discriminatory, right? They were aimed to exploit people in the colonies. People in the colonies. That's why the people organized the meeting, they discussed, and they believed that the Great Britain did not treat the colonies as equal citizens. The citizens of the colonies are not treated as equal citizens. They thought the people needed more control over their government. In 1775, colonies fought against the British army. Okay, the leaders met again and decided to organize an army. George Washington became the commander in chief of that army. Okay, now here they want to get separate from Great Britain. They wanted to form a country in 1776. They met again. Okay? And here Thomas Jefferson was asked to write a document where the people, where these 13 colonies wrote the Declaration of Independence. Clear? And they said that now we are free from Great Britain. अब हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही देखेंगे। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो प्रॉमिस्ड अमेरिकन्स 3 राइट्स। पहला, right to life, right to liberty, and the pursuit of happiness. This meant that the colonists had basic freedom that the government could not take away. Okay, this declaration on this date, July 4, 1776, clear, and Independence Day, they is celebrated on the 4th July. These are some of the facts. Now in next class I will discuss with you, right? Okay, factors or reasons responsible for American War of Independence. I will discuss important events. Then I will discuss result. I will discuss American Constitution, basic principles. I will discuss significance of American Revolution and War of Independence. American Revolution and War of Independence. Okay, and finally, we will also discuss, okay, Civil War in America. Civil War in America that was fought on the issue of slavery, and the year was 1861 to 65. So this part, American Constitution, when I will discuss, so here we will discuss the historical context and social context. Clear? And when you will read polity, and if you are familiar with this topic, so that will make you perfect. इससे क्या आएगा, परफेक्शन स्टेज। मैंने जितना पढ़ाया, कुछ भी भूल जाओगे तो 30% तो याद रहेगा ना। नहीं पढ़ने से तो बेटर है ना कि 30% याद रहे। ठीक है? When we read 100 words, we forget 70. But what if we read 20 words? क्या होगा? That's why I always say that discussion is very much important. Slides I am taking help, but slides से ज़्यादा important वो है जो हम board work में कर रहे हैं, because that we will be able to express in our answer sheet. So whatever is needed to be written in the answer sheet, I used to do board work for that, जिसको आप use कर सकते हो। ये तो एक कहानी narrate कर रहा हूँ जिसको आपको समझना है। Okay? So if you want to write good answer, two things are needed: sketch and diagrams, clear, and good practice of writing the points. And for that, board work is very much needed. Okay, so you must request your teachers also कि sir PPT की जगह क्या करो, board work use करो, or make a good combination of both these two things, because ultimately you have to write answer in the exam. वहाँ presentation नहीं देना है कि हमारी PPT सबसे अच्छी है, ठीक है, बॉस हमें रिवॉर्ड देने वाला है, नहीं भाई, ये यूपीएससी एग्जाम है। ठीक है, पीपीटी बनाने वाले लोग 20,000 रुपए सैलरी पे काम करते हैं, एक्सीलेंट पीपीटी बना के देते हैं। गॉट इट? ठीक है, द पीपल हु थिंक हियर दे रन द कंट्री। जो सोचते हैं वही देश चलाते हैं, बाकी लोग तो पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, दुनिया ऐसी है। गॉट इट? समझ गए? आज की क्लास बोरिंग तो नहीं रही थी बहुत ज्यादा? बिकॉज आई एम
कनेक्टिंग सो मेनी थिंग्स, तो आई नो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ये एग्जाम के नीड से के लिए बहुत ही रेलिवेंट क्लासेस. दीज आर relevance, these are having relevance for your examination. It will appear a little bit difficult, ठीक है, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा नहीं लगता है लोगों को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाने में. एंड हियर आई विल डिस्कस एटलीस्ट 4 आवर विथ यू, 5 आवर विथ यू. सो देर इज अ पर्पज बिहाइंड दिस. एक बार पढ़ लो तो चाहे वो क्वेश्चन पॉलिटी में आए, सोसाइटी में आए, कहीं कुछ रेफरेंस आएगा तो यू विल बी एबल टू यूज दैट पॉइंट. गॉट इट? ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम.